Okay, the next question is question number 13. So 13 onwards the questions are associated to the matter wave. ठीक है, matter wave का expression से associated है. तो first वाले में पूछा है कि अच्छा ये radiation के लिए पूछा है, but we use the concept of Bohr's de Broglie formula. If h is the Planck's constant, find the momentum of the wavelength 0.1 angstrom. So how do you find out momentum? From the matter wave concept, lambda is equal to h by p. So obviously p will be equal to h by lambda. So 6.625 into 10 to the power minus 10 to the power minus 30. Why? Wavelength कितना है? 0.1 angstrom means 10 to the power minus 10. 10 to the power minus 10. This much kilogram meter per second. You know momentum का unit है kilogram meter per second. Momentum का unit क्या होता है kilogram meter per second. अंजलि कोई काम तो नहीं कर रही हो यहाँ पर Question number 14. 14 says the de Broglie wavelength associated with an electron accelerated through a potential difference V is lambda. What will be the wavelength when the accelerating potential is increased to 4 volt? Now remember accelerating potential के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? Right. So accelerating potential के लिए lambda equal to h by root over of twice m q into v. This is what we use. Now they are saying that associated with an electron. So for electron you use the charge as E. So when the accelerating potential is V, wavelength is lambda. When the V becomes 4V, so lambda dash equal to h by root over of twice m e into 4V. So 4 square root का बाहर हम लोग ले सकते हैं. So this will be h by 2 root over of twice m e into v. Now this expression itself is what? So this will be lambda by 2. Lambda dash is equal to lambda by 2. Is that clear? Next, question number 15. Question number 15. 15 क्या बता रहा है? 15 बोल रहा है an electron and a proton have same amount of kinetic energy. Which of the two possesses greater wavelength? Electron and proton have the same amount of kinetic energy. Which one have greater wavelength? तो formula क्या है? h by root over of twice m k. So lambda of electron will be h by root over of twice mass of electron into kinetic energy of electron, and lambda of proton is equal to h by root over of twice mass of proton into kinetic energy of proton. Now they are saying kinetic energy of electron and proton are same. Kinetic energy of electron and proton are same. That means this and this are equal. So if I divide these two, then I get lambda e by lambda p is equal to h and 2 and kp and k will get cancelled. So we'll have root over of under root of mp by me, right? Yes or no? Even I follow PH question that which one of them possesses greater wavelength. So you understand mass of proton. Since mass of proton is greater than mass of electron, तो किसका wavelength ज़्यादा होना चाहिए? Electron. So therefore lambda of E is greater than lambda of B. ये हो गया है 14 वाला सब लोग का? हाँ या ना? अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 आई थिंक डेविएशन जर्नल एक्सपेरिमेंट सिलेबस से हटा दिया ना, डिलीटेड है ना डेविएशन जर्नल एक्सपेरिमेंट. ठीक है फिर छोड़ दो ये, सिर्फ एक कांसेप्ट यहाँ पर लिख लो. क्वेश्चन नंबर 16 में बोला हुआ है मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ डेविएशन जर्नल एक्सपेरिमेंट. सो डेविएशन जर्नल एक्सपेरिमेंट का सिग्निफिकेंस यही था कि द
द रिवर्स कंसेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक मतलब डी ब्रॉगली जो मैटर वेव दिया था वो मैटर वेव को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करता है, एक्सपेरिमेंटली जस्टिफाइज द मैटर वेव, प्रेजेंस ऑफ मैटर वेव। ठीक है, डी ब्रॉगली एक्सपेरिमेंट, जस्ट लिख लो ये क्वेश्चन नंबर 16, डी ब्रॉगली मैटर वेव सॉरी डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट justified the presence of matter wave. The presence of matter wave. अच्छा, next question number 17. A non-relativistic electron, non-relativistic electron means normal electron, and a non-relativistic proton are moving and having the same de Broglie wavelength. Okay, so it is just similar to this question. Instead of kinetic energy, they are saying the wavelength are same, right? So question number 17, lambda E equal to lambda P is given. Now they are saying which of the following are also same for the two particles? Justify. So lambda equal to lambda P means we can write h by root over of twice m e into k e is equal to h by root over of twice mp into kp. So if you cancel them off, we get meke is equal to mp into kp. Another thing, you can also write from here h by momentum of electron equal to h by momentum of proton, right? So therefore p of e is equal to p of proton. ठीक है, अब जस्टिफाई करो जल्दी से। That implies mass of electron into velocity of electron equal to mass of proton into velocity of proton. ठीक है, अब जल्दी से जस्टिफाई करो। स्पीड दोनों का सेम है, हाँ या ना? स्पीड दोनों का सेम है, हाँ। अरे मोमेंटम दोनों का सेम है, तो स्पीड कैसे सेम हो जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन सेम है क्या? अलग है ना, तो ऑब्वियसली v एंड vp आर डिफरेंट हो जाएगा से। सेकंड मोमेंटम, यस मोमेंटम इज सेम, ओके। सो द फर्स्ट वन इज नो, अच्छा मतलब स्पीड इज नॉट सेम, मोमेंटम इज सेम, काइनेटिक एनर्जी इज ऑब्वियसली नॉट सेम, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट सेम, ठीक है। और द फ्रीक्वेंसी, ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी सेम होना पड़ेगा क्योंकि दोनों में h nu होगा ना, मतलब लैम्डा अगर दोनों का सेम है, वेवलेंथ अगर दोनों का सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम होना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? लैम्डा अगर दोनों का सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम होना पड़ेगा। ऐसा जरूरी है क्या? कैसे भी जरूरी है? जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? देखो, अच्छा I'll tell you। देखो लैम्डा दोनों का सेम है ना, तो लैम्डा इज इक्वल टू lambda into frequency is equal to v, okay? So lambda e equal to lambda p means ve by nu e, मतलब frequency लिख रहे हैं fe equal to vp by fp, ठीक है? Since ve is not equal to vp, that implies fe is not equal to fp, ठीक है? So यहाँ से since me is less than mp, that implies ve is greater than vp. यहाँ पर भी same thing, me is less than mp, that implies kinetic energy of electron is greater than kinetic energy of clear? So सिर्फ क्या सेम मिला हम लोगों को? मोमेंटम सेम। अगर इसमें क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता कि कौन सा फुट स्पीड ज्यादा है, किसका स्पीड ज्यादा है, किसका स्पीड कम है, किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, किसका काइनेटिक एनर्जी कम है, तो भी हम लोग यहाँ से निकाल पाते हैं। राइट, सो यू कैन आल्सो राइट ओवर हियर, ये एक्चुअली ऐसे लिखने से अच्छा होता, कौन सा v ग्रेटर है ना, v is greater than vp, that implies fe should be greater than fp।
जाओ निकल जाओ अभी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड आउट द de Broglie wavelength of a relativistic electron whose kinetic energy is 3 MeV। अब देखो काइनेटिक एनर्जी अगर दिया हुआ होता है we'll use this formula, ठीक है। तो जल्दी से लिख लो क्वेश्चन नंबर 18, यूज लैम्डा इक्वल टू h बाय नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या। रिलेटिविस्टिक का मतलब है कि जो मोशन में है, मतलब जो एक्चुअली में क्या है, जब चार्ज पार्टिकल सॉरी कोई भी पार्टिकल मूव करता है एट वेरी हाई स्पीड, तब हम लोग उसको रिलेटिविस्टिक बोलते हैं। क्यों रिलेटिविस्टिक बोलते हैं? क्योंकि उसका जो मास है ना वो कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहता है एट वेरी हाई स्पीड। तब आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ जाता है, तो इसीलिए हम लोग तब रिलेटिविस्टिक बोलते हैं। मतलब हम लोग को नॉर्मली करना है, हम लोग को चेंजेस नहीं करना है, उसके लिए वी डोंट हैव टू मेक एनी चेंजेस। सो हम 3 क्वेश्चन तुम लोगों को दे रहे हैं फॉर सॉल्विंग एट होम। क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21। 19, 20 और 21 বাড়িতে সলভ করে দেখলো ডাউট থাকবে সেটা আমাকে বলবে, ঠিক আছে?